आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूं। मैं हूं शाहीन सलाहुद्दीन। आपको बताते चलें कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कल गैर वाबस्ता ममालिक तहरीक की 15वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं और वहां मुलाकात का इम्कान है, बल्कि हो रही है, इम्कान नहीं, हतमी तौर पर पता है कि हो रही है मुलाकात हिंदुस्तानी वजीर आजम मनमोहन सिंह साहब से। हिंदुस्तान पाकिस्तान सरबराहों की एक पिछली मीटिंग भी हुई थी, आपको याद होगा, जो सदर जरदारी साहब की और मनमोहन सिंह साहब की हुई थी। और उसके बाद कहा गया था कि वो बॉडी लैंग्वेज और जो कमेंट्स आए उससे लगा कि आइस मेल्ट नहीं हुई। अब जो सूरत हाल सामने आई है उसके बाद एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। कहा जा रहा है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अक्रॉस द बॉर्डर? बात करते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं प्रफुल बिदवाई, वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट। हेलो प्रफुल, हाउ आर यू? हेलो, ये बताइए, हाउ डू यू फील अबाउट टुमारोज मीटिंग जो कल एक्सपेक्टेड है इजिप्ट में, मनमोहन सिंह साहब की मीटिंग, इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर? I am hopeful but cautiously optimistic. I think what has happened is कि शुरुआत तो हो गई है अभी. I think there is a decision in New Delhi that the whole dialogue process will have to be restarted. There are many indications of that, of India's willingness. Prime Minister Manmohan Singh told journalists on his way back from Italy that what he said to President Zardari in front of the media, in the presence of the media, wasn't actually intended to be said that way. He had forgotten that the media is present, so but that's a gesture. He realizes that there is so that was a need to correct that, and उन्होंने ये भी कहा कि there have been contacts between the ISI and the military attaches of India in Islamabad, and there has been some sounding out by the Indian High Commissioner. Yeah. So all the indications suggest that India has got a signal from Pakistan that it intends to pursue the Mumbai attacks case fairly seriously. प्रफुल, टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी बात से। एक तो ये कि मनमोहन सिंह साहब ने एक्सेप्ट किया कि वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, मीडिया के सामने जरा सी ब्लंट बात हो गई थी। चलें, तो गलती देर आए दुरुस्त है वाली बात है, इसका मतलब है अब कॉशियसली बात आगे बढ़ेगी। एंड सेकेंडली, जो कॉन्टेक्ट ISI से हुए हैं इस्लामाबाद में, यहाँ पर भी न्यूज आई है आपके हाई कमीशन की, सीनियर ऑफिशियल्स की, वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुए और कहाँ तक बात आगे बढ़ी? ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी किसी को सरकार के मतलब बाहर जो लोग हैं उनको नहीं है। बट फ्रॉम व्हाट आई कैन सी, देयर इज अ कमिटमेंट from Pakistan, from the Pakistan government, that it will take some action. It will try to prevent such attacks, and it will act in a transparent fashion. I think that is very important because that that impact that will have an impact in India, and without that impact, you can't sustain the dialogue process. People are still very upset at what happened, and more than 150 people were killed. So this is a pretty serious matter. At the same time, I think India has decided in some fashion that it has to embrace Pakistan as into a dialogue process and hold it down there, and I think that's very important. ओके प्रफुल, एक चीज हुई है, आसिफ जरदारी साहब बहुत सुना था बाज लोगों के नजदीक आगे बढ़ रहे थे दोस्ती के लिए। उन्होंने कहा था नो न्यूक्लियर स्ट्राइक फर्स्ट, उन्होंने कहा था बॉर्डरलेस होना चाहिए, उन्होंने कहा था वीजा होना चाहिए। एंड सर्टनली व्हेन मनमोहन सिंह साहब ने जो कुछ कहा प्रेस के सामने, डोंट यू थिंक इस मुल्क में जो हॉक्स हैं उन्होंने थोड़ा सेटबैक दिया होगा कि जरदारी साहब आप कहां पहुंच गए थे, लुक व्हाट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिड, तो नेक्स्ट टाइम डोंट गो टू फार? नहीं, वो तो है, मगर वो तो दीज आर टेम्पररी सेटबैक्स. Hopefully they will be overcome, and I don't think that, well, we've taken a lot of this kind of rudeness and words from each other, so we can take it in our stride. Okay. I don't think personally that Manmohan Singh should have said what he did in front of the media, but you see, he has to say that we are
we are planning to do something, but Pakistan has to be seen to be acting, and I think to satisfy domestic opinion he had to say it, but I wouldn't have said it that way. I think. Okay, let me ask you this question. मनमोहन सिंह साहब, मैं जो कुछ उनको पढ़ती हूँ, देखती हूँ, आप लोग जो पढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत ही धीमे, बहुत ही सोच के, बहुत ही आहिस्ता से बोलते हैं हर चीज. तो अगर उन्होंने ये कही थी, हम लोग यहाँ ये समझते हैं कि शायद वो इंडिया में हॉक्स को प्लीज करने के लिए कही थी, इसलिए प्रेस में बोल दिया था. हाँ, थोड़ा ऐसा ही होगा. हॉक्स के सिवाय मैं समझता हूँ ऑर्डिनरी पब्लिक को भी जो मिसगिविंग्स है उनको दूर करने की जरूरत है, इसलिए उनको ये आई थिंक दैट वाज अनदर कंसिडरेशन. इट्स नॉट जस्ट हॉक्स. आई मीन इवन द बीजेपी इज ओनली वेटिंग to find some fault and to pick on any Indian initiative in favor of a dialogue. So I think he has to proceed cautiously, but he should have been more graceful. He should have been more diplomatic. Diplomats say a lot of things in private which are very harsh, but and I think this should not have been said in public. Okay, thank you so much, Profil, for joining from Delhi. Thank you. बात कर रहे थे इंडिया के एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट प्रफुल्ल बिदवाई से. एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड टू इंडिया.